हम सभी लोग आपस में मिलकर रहें, हम सभी लोग आपस में मिलकर रहें, गंगा हृदय में बहा दो प्रभु ज्ञान की ज्योत मन में जगा दो प्रभु। सबके अंतःकरण जगमगाने लगे, सबके अंतःकरण जगमगाने लगे। बस अविद्या का पर्दा हटा दो प्रभु ज्ञान की ज्योत मन में जगा दो प्रभु। फिर किसी और उलझन में उलझे न हम, फिर किसी और उलझन में उलझे न हम। मन की उलझन से दामन छुड़ा दो प्रभु ज्ञान की ज्योत मन में जगा दो प्रभु। प्यास मन की बुझे एक ही घूंट से, प्यास मन की बुझे एक ही घूंट से। अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु ज्ञान की ज्योत मन में जगा दो प्रभु। आ गए हैं पथिक दर पे आशा लिए, आ गए हैं पथिक दर पे आशा लिए। अपने चरणों में हमको बिठा दो प्रभु ज्ञान की ज्योत मन में जगा दो प्रभु। राह भटके हुओं को दिखा दो प्रभु ज्ञान की ज्योत मन में जगा दो प्रभु। ज्ञान की ज्योत मन में जगा दो प्रभु। ज्ञान की ज्योत मन में जगा दो प्रभु।
ज्ञान की ज्योत मन में जगा दो प्रभु, ज्ञान की ज्योत मन में जगा दो प्रभु, राह भटके हूँ को दिखा दो प्रभु, ज्ञान की ज्योत मन में जगा दो प्रभु, ज्ञान की ज्योत मन में जगा दो प्रभु। क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा, बात बिगड़ी हुई है बना दो प्रभु, ज्ञान की ज्योत मन में जगा दो प्रभु। हम सभी लोग आपस में मिलकर रहें, हम सभी लोग आपस में मिलकर रहें, प्रेम गंगा हृदय में बहा दो प्रभु, ज्ञान की ज्योत मन में जगा दो प्रभु। नमस्ते आचार्य जी, आप म्यूट पर हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। तो आप सबका आज के साप्ताहिक आपसा के सत्संग में स्वागत है। We are very blessed कि today Acharya Varun ji will be leading these services. So we appreciate that. So Acharya ji, without much ado, I request you to lead us in Sandhya, Havan and Pravachan. बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, over to you. धन्यवाद। कभी सभी मुझे सुन पा रहे हैं? जी ठीक। सभी महानुभावों का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। आइए आज का सत्संग हम सच्ची निष्ठा के साथ, ईश्वर में पूर्ण विश्वास के साथ एवं अपने हृदय में इस संकल्प के साथ आरंभ करें कि इस जाते हुए वर्ष में हम जितने भी इस प्रकार के कर्म कुसंस्कारों से युक्त होकर किए हैं, जो हमारी साधना में, हमारी उन्नति में बाधक बने हैं, जो भी हमने त्रुटियां और ऐसे व्यवहारों को बाय मिस्टेक किया है, उनको हम आज पूर्ण रूप से अग्नि को समर्पित कर दें। अपने अंदर की अग्नि में, प्रकाश ज्ञान की अग्नि में ईश्वर के उस प्रकाश का आवाहन हम करें, जिससे कि हमारा मन निर्मल, हमारा चित्त शुद्ध और हमारी संपूर्ण सत्ता
सिंसियर और ट्रांसपेरेंसी को अटेन करें, जिससे कि हम ईश्वर के पात्र बने। इसी भावना के साथ, संकल्प के साथ, जीवन को श्रेष्ठ बनाने के संकल्प के साथ हम आज का अपना यज्ञ आरंभ करते हैं। पहले ब्रह्म यज्ञ और फिर देव यज्ञ। 3 बार लंबा गहरा श्वास लेकर ओम की पवित्र ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओ ओ ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालने कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राणे हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेय मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए, we start now ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ और संध्या is meditative contemplation on the Ishwar in order to connect our individual limited consciousness to infinite, omniscient, omnipresent, omnipotent, and all blissful, peaceful, and full of all divine attributes. That consciousness, which is the source of life, which is the source of all happiness and all creation. अथ ब्रह्म यज्ञः। ॐ भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक्, ॐ प्राणः प्राणः, ॐ चक्षुः चक्षुः, ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम्, ॐ नाभिः, ॐ हृदयम्, ॐ कण्ठः, ॐ शिरः, ॐ बाहुभ्यां यशोबलम्, ॐ करतलकरपृष्ठे, ॐ भूः पुनातु शिरसि, ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः, ॐ स्वः पुनातु कण्ठे, ॐ महः पुनातु हृदये, ॐ जनः पुनातु नाभ्याम्, ॐ तपः पुनातु पादयोः, ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, ॐ भुः, ॐ भुवः, ॐ स्वः, ॐ महः, ॐ जनः, ॐ तपः, ॐ सत्यम्, ॐ ऋतं च सत्यं चाभिधात्तपसोऽध्यजायत, ततो रात्रजायत, ततः समुद्रो अर्णवः, ॐ समुद्रादर्णवादधी संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी, ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्, दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजीरक्षिता पितर इषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। ॐ प्रतीचीदिग्वरुणोऽधिपतिः प्रीदाकु रक्षिता अन्नमिषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः।
ॐ उदीचीदिक् सोमो धिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुध ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ॐ ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ॐ उदयन्तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्थस्थुषश्च स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमधिनाहस्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. You can slowly rub your hands, your palms, and gently put on your eyes. Now we will begin Ishwar Stuti Prarthanopasana Mantraha, in which we will adore, we will praise the Almighty Parmeshwar, His divine attributes, His wonderful presence, which makes us feel the bliss, peace, and joy of life. Without that,
nothing can survive. अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वहस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त। ॐ अग्नेय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यूयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतीश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, हे प्राणों के प्राण, सब दुखों से छुड़ाने हारे, हे अनंत सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता, कण कण के आधार, हे सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी प्रभो, आज इस प्रातः काल की शुभ एवं मधुर वेला में हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। अपने हृदयों में श्रेष्ठ प्रार्थनाएं लेकर, श्रेष्ठ कामनाएं लेकर, अभिप्साएं लेकर, हे जगदीश्वर, हमारे मन के सभी अंधकार अज्ञान को दूर कर दीजिए। हमारे मन को अपने वेद ज्ञान की ज्योति से आलोकित कर दीजिए। हमारे हृदयों में हे करुणा के सागर,
परमात्मा अनन्य भक्ति को उत्पन्न कीजिए। हमारे प्राणों की सभी मलिनताओं, दुर्बलताओं को दूर कर हमारे प्राणों को निर्मल कीजिए। हमारे शरीरों में जितने भी रोग शोक हैं उनको समाप्त कर अपनी आरोग्य शक्ति को स्थापित कीजिए। हे ईश्वर, हमें संपूर्ण रूप से अपने योग्य बनाइए। अपनी शक्ति के, अपने ज्ञान के, अपने आनंद के, अपनी शांति के, अपने दिव्य गुणों के योग्य बनाइए एवं संपूर्ण संसार में शांति को, सामंजस्य को, सौहार्द को, प्रेम को प्रतिष्ठित कीजिए। यही आपसे हमारी विनम्र निवेदन प्रार्थना है। स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। Now we will chant three mantras from each, from Shanti Karanam, Swasti Vachanam and Shanti Karanam. As I came to know, last week Acharya ji chanted till mantra number 18. Today we will start from 19 to 21 from each Swasti Vachanam and Shanti Karanam, 18, 19, 20, 18, 19, 20th and 21st. अथ स्वस्ति वाचनस्य त्रयो मंत्राः। ओम अरिष्टः समर्तो विश्व एधते प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि यमादित्यासो न यथा सुनीतिभिर्ति विश्वानि दुरिता स्वस्तये यम देवासो अवथ वाजसातौ यम शूरसाता मरुतो हिते धने प्रातर्यावाणं रथमिन्द्रसानसिं दृश्यन्तमारुहेमा स्वस्तये स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु स्वप्त्यप्सु वृजनेष्वर्वति स्वस्ति नः पुत्रकृथेषु योनिषु स्वस्तिराये मरुतो दधातना। इति स्वस्ति वाचनस्य त्रयो मंत्राः। अथ शांति करणस्य त्रयो मंत्राः। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैव इति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे किण्वन्ति विदथेषु धीराः यद पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इति शांति करणस्य त्रयो मंत्राः। Now I request all the Yajmans, please take few drops of water on the palm of your right hand in order to do Sankalpa Patha. We will make strong resolution in our heart to complete this yajna with utmost devotion and sincerity. अथ संकल्प पाठः। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीये प्रहरोत्तरार्धे वैवस्वते मनवन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे एकवृन्द षण्णवतिकोटि अष्टलक्ष त्रिपञ्चाशत्सहस्र चतुर्विंशत्युत्तरशततमे षष्टिसंवत्सरे अशीत्यधिक द्विसहस्रे वैक्रमाब्दे द्विशततमे दयानन्दाब्दे उत्तरायणे
वसंत ऋतौ फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदश्यां तिथौ शनिवासरे प्रातः काले शुभ मुहूर्ते उत्तरी अमेरिका महाद्वीपे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका देशे सर्वकल्याणार्थम ईश्वर प्रीत्यर्थम च देवयज्ञः क्रियते। छोड़ देंगे जल को। Please take few more drops of water on the palm of your right hand for Achman. Om Amritopastaranamasi Swaha. Please sip the water. Second time. Om Amritapidhanamasi Swaha. Third time. ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। Please take few more drops and just rinse your hand behind you. Now on the left hand palm, few drops of water for Ang Sparsha mantra with the help of middle and ring finger of the right hand. First, after the mantra, please touch the water and then right to left side of the body, different body parts, in order to purify and strengthen them. Om Vangma Asya Astu. Om Nasorme Prano Astu. Om Akshanorme Chakshurastu. Om Karnayorme Shrotram-astu. Om Bahorme Balamastu. ओम उर्वोर्म ओजो अस्तु। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। Agnyadhana mantra. Please light the deepak first with the mantra. Om Bhur Bhuvah Swaha. Now please take camphor or whatever you are using in order to light the fire, Agni, in the Havan Kund. And after the mantra, please establish fire, Agni, in the Havan Kund. Om Bhur Bhuvah Swardyauriva Bhumna Prithviva Varimna तस्यास्ते पृथ्वी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना ध्यायादधे। अग्नि को प्रतिष्ठित कर दें यज्ञ कुंड में। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्रही त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। Please take 3 wood sticks, samidhas, and dip them into the ghee. And after swaha, please offer each samidha one by one. Om ayanta idma atma jata vedastene ध्यस्ववर्धस्व चेद्दवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्ना द्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम। ॐ समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोर्धयता तिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन। ॐ सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन। अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम। ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछाय विष्ठय स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्नमम। पंचघृत आहुति मंत्र।
5 बार घी की आहुति देंगे स्वाहा के साथ। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। जल प्रसेचन मंत्राः। Sprinkling of water first on your left side, on your front side opposite Yajman in the east. Om adite anumanyasva. Now where Yajman is sitting towards the west. Om anumate anumanyasva on the left side. Om saraswatya anumanyasva after the mantra from the right side and all around. ओम देव सविता प्रसूव यज्ञं प्रसूव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वाः केतपुः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। अघारा वाज्य भाग आहुति first on the left side in the north in the Havan Kund, second on right, south, and 2 in the center. Om Agnaye Swaha. Idam Agnaye Danna Mama. Om Somaya Swaha. Idam Somaya Idanna Mama. Om Prajapataye Swaha. Idam Prajapataye Idanna Mama. Om Indraya Swaha. Idam Indraya Idanna Mama. 4 more oblations of ghee only. Vyaharti Ahuti Mantra. Om Bhuragnaye Swaha. Idam Agnaye Danna Mama. Om Bhurvayave Swaha. Idam Vayave Danna Mama. Om Swaradityaya Swaha. Idam Adityaya Danna Mama. Om Bhurbhuvah Swaragnirvayavadityebhyah Swaha. इदम अग्निर्वायवादित्येभ्यः इदन्न मम। पुष्टकृत आहुति। कोई मीठा अगर हो तो उसकी आहुति देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्निष्टत् स्विष्टकृत विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे। अग्नये सृष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय
स्वाहा। इदमग्नये सुष्टकृते एदन्न मम। एक घी की मौन आहुति। ओम स्वाहा। इदं प्रजापतये इदन्न मम। प्रातःकालीन सायकालीन आहुतियों से, मंत्रों से आहुतियां देंगे सामग्री के साथ। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रिन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा। इदं वायवे अपानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मौक्तिं विधेम स्वाहा। As all know, everyone knows that tomorrow and day after tomorrow is Holi. Vasanti Navasasyeshthi Tihar. For that occasion, we will offer some oblations for Holi. ओम शतायुधाय शतवीर्याय शतोतये भीमातिशाहे शतं योनः शरदो अजीजादिन्द्रो निषदति दुरितानि विश्वा स्वाहा। ओम ये चत्वारः पथयो देवयाना अन्तराद्या वा पृथिवी वियन्ति तेषां यो अज्ञानी मजीजिमावहास्तस्मै नो देवाः परिदत्तेः सर्वे स्वाहा। ओम इद्वत्सराय परिवत्सराय संवत्सराय कृणुता बृहन्नमः तेषां वयं सुमतौ यज्ञियानां जोग्जीता अहतः स्याम स्वाहा। ओम अश्वावती गोमती सुन्द्रितावती बिभ्रती या प्राणभृता मतन्द्रिता खलमालिनी मुर्वारामस्मिन् कर्मण्यमुपय्ये ध्रुवां सा मे त्वन्पायिनी भूयात् स्वाहा। इदं सीतायै इदन्न मम। ओम सीतायै स्वाहा। ओम प्रजायै स्वाहा। ओम क्षमायै स्वाहा। ओम भूत्यै स्वाहा। ओम बृहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे
मुदगाश्च मे खलवाश्च मे पृङ्गवश्च मे वणश्च मे श्यामकाश्च मे निवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मशुराश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। सभी परिवार गणों के लिए, समाज के लिए हमने कल्याण के लिए, मंगल के लिए आहुतियां दी। ओम एक और आहुति के साथ समस्त कल्याण के लिए और मंगल के लिए आहुति देंगे। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे पोषं रयिणामरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचः सुदिनत्वमहनां स्वाहा। 3 बार गायत्री मंत्र से आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। पूर्ण आहुति करेंगे 3 बार। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। यज्ञ प्रार्थना करेंगे। पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरें अश्वमेधादिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए
वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हों। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। अब हम सभी श्रेयस यजमानों को आशीर्वचन से आशीर्वाद देंगे। ओम सत्याः सन्तु यजमानानां कामः। ओम सफलाः सन्तु यजमानानां कामः। ओम पूर्णाः सन्तु यजमानानां कामः। ओम सौभाग्यमस्तु। ओम शुभं भवतु। ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमा विश्व पुनर्दधताग्नता जानता संगमे मही। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। सभी यजमानों को, राजेश खोसला जी को एवं समस्त श्रुत जी विराट जी के परिवार को, सभी बच्चों को, अनुश्रव ऋचक्षा और वैदिक और सभी जितने भी यजमान हैं, लक्ष्मण जी एवं अर्चना जी, अरोड़ा फैमिली जी, समस्त फैमिली एवं लीला जी, प्रमीला जी, राज भल्ला जी, राजेंद्र जी, समस्त परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की और आशीर्वाद। सरोज जी, सुरेंद्र जी, उपेंद्र जी, यश जी, समस्त परिवारों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं एवं आशीर्वचन, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद जी। तो सबको एक बार, जैसे आचार्य जी ने बोला, होली आने वाली है, तो
उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सुंदर लग रहा है। आई ऑलवेज एडमायर, नाउ आई कैन सी 3 generations सिटिंग ऑन दिस हवन कुंड, which is always very close to my heart, and I really enjoy that to see here in Atlanta. And we are glad that we can see them and all other Yajmans. Today we were able to see Rajesh Khosla ji joining from Dallas. Then Arush is always there. I really admire this young kid who always never misses this, and he joins us from Michigan, Detroit. तो और बाकी आई डोंट नो, दादू दादू फोन, आईफोन, ये कौन है? माता जी भी हर बार आती हैं, लक्ष्मण जी भी अपना कैमरा हमेशा ऑन करके रखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज उपेंद्र जी भी डालर से जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। And all other who have not turned on your cameras, but I know there are 30 participants in this Zoom session today, so we welcome all of you. So now we have time for at least one or maybe two short bhajans. So if Pramila ji, if you are available, so can you turn on your camera? If I can see Pramila ji. If not, any other volunteer? If Pramila ji is not available, if anybody else who would like to volunteer for bhajan today? Pramila ji is here, so. Can you hear me? Ji. Okay, thank you. Namaste. अब तो हरज सुनो प्रभु मेरी, अब तो हरज सुनो प्रभु मेरी, मैं शरण पड़ूं प्रभु तेरी, मैं शरण पड़ूं प्रभु तेरी, अब तो अरज सुनो प्रभु मेरी, अब तो तुम मानुष तन मोहे दीनो, तुम मानुष तन मोहे दीनो, नहीं भजन तुम्हारो कीनो, नहीं भजन तुम्हारो कीनो, विषयों ने ले ली घेरी, अब तो हरज सुनो प्रभु मेरी, अब तो सुतदारादिक परिवारा, सुतदारादिक परिवारा, सब स्वार्थ का संसारा, सब स्वार्थ का संसारा, जिन है तो पाप की ढेरी, अब तो हरज सुनो प्रभु मेरे, अब तो हरज सुनो प्रभु मेरे, अब तो माया में जीव भुलायो, जीव भुलायो, जीव भुलायो, माया में जीव भुलायो, नहीं रूप तुम्हारो जानो, नहीं रूप तुम्हारो जानो, पढ़ो जन्म मरण के फेरे, अब तो हरज सुनो प्रभु मेरे, अब तो हरज सुनो
प्रभु मेरे। अब तो भव सागर में नीर अपारो, भव सागर में नीर अपारो, कर कृपा प्रभु आप ही तारो, कर कृपा प्रभु आप ही तारो। ब्रह्मानंद करो ना देरी, अब तो अरज सुनो प्रभु मेरे, अब तो अरज सुनो प्रभु मेरे। मैं शरण पढ़ूं प्रभु तेरी, मैं शरण पढ़ूं प्रभु तेरी। अब तो अरज सुनो, अरज सुनो, अरज सुनो प्रभु मेरे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमिला जी, बहुत ही सुंदर भजन, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम, सो I'll request, it's 10:58, 2 minutes maybe, I don't know. So I will request Acharya ji. Acharya ji, can you start the pravachan? Acharya Dev ji. हाँ जी बिल्कुल। ओम। धन्यवाद जी। ओम प्रजाभ्यः पुष्टिं विभजन्त आसते रयिमिव पृष्ठं प्रभवन्तमायते असिन्वन् दृष्टहि पितुरत्ति भोजनं यस्ताकिनोः प्रथमं सात्युक्त्यः। ओम शांति शांति शांति। सभी आर्य गण को, मातृशक्ति को मेरा नमन एवं सभी आर्य बंधुओं को अभिनंदन। टुडे it's my privilege to talk about on this great occasion of Holi, and today we are also commemorating the sacrifice of Shahid Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev. Shahid Divas is today, 23rd March 1931, on which day they were sentenced, Britishers took their lives. The great revolutionaries who were fearless, and the prime goal of their life is to liberate Bharat Mata from the bondage of foreign rule. And I will also take account of this great festival, spring festival of Holi, the meaning of this festival, what is the significance, historical significance, and what should we do on this spring festival. So this, first of all, I would like to just take the meaning of this mantra, which is from Rig Ved, 2nd Mandal, 13th सूक्त and 4th मंत्रा। दूसरे मंडल के 13वें सूक्त का चौथा मंत्र है, और बहुत सुंदर अर्थ है इस मंत्र का, जिसमें कहा जा रहा है, जैसे आए हुए
अतिथि के लिए धारक प्रभावशाली ऐश्वर्य को प्रस्तुत करता है। Like when some guests come to a man, to a family, the family presents the best to the guest in order to give him respect. The same way, सच्चे याज्ञिक लोग पुष्टि को सब प्रजाओं के लिए बांटते हुए बैठे हुए यज्ञ कर रहे हैं, which means the people who are full of resources, they are taking care of all society needs, social needs, and they are fulfilling the object of the society. ऐसा राष्ट्र तुम पिता से आए हुए, which means such nation in which this kind of tendency, values is always generated from the great Ishwar, Supreme Ishwar. Such kind of nation does not possess the resources into his jaw and release them, distributes them for the sake of well-being of everyone. And then the mantra says, उन भोजनों का, which were not, उन भोजन means here the resources, those resources which are not kept, possessed, or and under few people, we should do yajna. And when we do the havan, the yajna means for the sake of paropakar, for the well-being of everyone in the society. When someone offers something, that is called yajna. वह यह कर्म, यह यज्ञ स्तुत्य है, means we must praise this kind of deed in the society. There are so many noble people here. When I arrived, I met who are without reserve, without any selfish motive. They are distributing their resources in order to fulfill the object of Arya Samaj. And what is the prime object of Arya Samaj? We must not forget that. Because if we forget our duties and our goals, the first thing to remember is our prime object. And then the duties can be distributed accordingly. तो हमारा आर्य समाज का छठा नियम बोलता है कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है. The prime object of this samaj is to do well-being, welfare for everyone. And then Maharshi Dayanand Ji, he is a spiritual social scientist. What does he say? He gives meaning to everything what he has written. Nothing is left out in his writings. And what he says then, what is the meaning of upkar? How can we do philanthropic activities and what is the meaning of them? Without the clarity in our mind about our deeds, whatever we are going to do, our duties, what is the purpose of duties, what is the main intention of the duties, most likely our all deeds will be going in a vain without any meaningful outcome. So here he says, अर्थात शारीरिक, आत्मिक
और सामाजिक उन्नति करना। To progress physically, spiritually and socially. That is the meaning of paropkar. If we only think, okay, some people think that I have this resource, and if I distribute this resource, I will do paropkar. No, paropkar we can do partially, that will be called paropkar, because of course we can fulfill someone's physical needs. Somebody needs clothes, someone needs some money to have food, that's okay. But that's not the complete picture. That's not the, I must say, that homogeneous system in which everything is included. It is not inclusive. Paropkar is inclusive, not exclusive. When we include the physical growth of everyone in the society, when we include the spiritual progress of everyone in the society, all members should spiritually progress. When we together go in that direction. And thirdly, look how beautiful and scientific it is. Without the body is the base, the physical is the base of our whole life. If physical is not healthy, if we are not healthy, we don't have power, we don't have energy, we can't do anything, not even the spiritual progress. So first of all, we need to make our body robust, strong, healthy, and very aware. Know what to eat, what not to eat, what to do, what not to do. And it must come from within, not from an artificial kind of imposition. Then when body is strong, is healthy, then spiritual progress. Without spiritual progress, without spirituality, whatever we will do, the outcome will not be visible in front of eyes. That's why Swami Dayanand Ji, when he wrote this principle, sixth principle, he clarified that along with the physical progress, physical health, we need a strong spiritual society. Without that spirituality, whatever we will do, it might be for some time relative according to our needs, but it will sustain and survive when we have the spiritual evolution in our life. And then only the social progress is truly possible, really possible. So in this mantra actually we are looking is correlating with this principle, sixth principle, that whatever resources we have, we should distribute shatahast samahara sahasrahast sankira for the well-being of the society, for the physical, spiritual, and social growth of the society. And then comes, look at the history. We have to look upon our history. What happened in the past? How Swami Dayanand Ji, a great rishi who was able to liberate himself at that time, who could have gone to moksha immediately whenever he wanted, because he was free from all bondages. He was Jivan Mukta. But he sacrificed all his individual salvation, and he declared that I will not accept the moksha. I will not take the moksha till there is suffering, there is bondages in the society. He forego that. So what does that mean?
That means he himself first attained and exemplified whatever he wrote in the principles of Arya Samaj. He realized that सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदिमूल परमेश्वर है. After realization, he entered into the domain and in the prachar and prasar of the Vedas. And he wrote at one place, I read that we don't have the authority to speak about the Vedas. He was so strong, his language was so strong, if we don't have that spiritual experiences and realizations. So here, of course, we have to talk about it. We have to do satsang, we have to do swadhyay, but he is talking from that utmost sincerity, that so that no hypocrisy must come in between our behavior and our personal life, our social life and our individual life. Our personal life should not be different. Whatever values we are following, it should reflect in our social life. Otherwise, we are not honoring Swami Dayanand, we are not preserving our culture, our Vedic culture in our life. Then look at the example of Shahid Bhagat Singh, whose whole family was Arya Samaj family. His dada was Arya Samaji, his father was Arya Samaji. And when he saw that massacre in Jallianwala Bagh, when he saw Lala Lajpat Rai was hit by a police officer and he was dead, then he decided to become a revolutionary, and to that revolution to liberate the India, to liberate our motherland from the foreign rule. His ideas were so radical that still we know his bravery, his courage, his fearlessness in order to protect the society, to protect the nation, to protect Bharat. So when that sincerity, that dedication arises in us, it comes from within, from the soul, that how can I be happy if my neighbor, my country, my society is enslaved? Only then he took this sankalpa, and from that time he never stepped back. So this is the significance of today, that we all are the army of Swami Dayanand. All Aryas, they are the army. And what is our duty and what is our goal? Our goal is to make the whole world noble. That is our goal. But before making the whole world noble, we need to make ourselves noble. स्वयं को रूपांतरित किए बिना हम संसार में रूपांतरण का कोई भी अपेक्षा करना हमारा इनसिंसियरिटी है. अगर हम चाहते हैं कि समाज में सत्य की प्रतिष्ठा हो, धर्म की प्रतिष्ठा हो, and if we want to establish dharma and the noble values in the society, we are the first ground, we are the first land to sow that seeds of values in our lives. Somebody asked me yesterday that we see so much our children are attracted by different gurus, different this side, that side they are going. Why? The simple answer is, are we really sincere? Are we really practicing the values and the principle of the Arya Samaj which Swami Dayanand ji has
given to us to follow. We have to observe that sincerity in ourselves, not in others. If we are doing that, that's perfect. We will make the change. We will bring the change. Maybe it's a butterfly effect, but it will happen. But if we are just speaking, talking, and not practicing those values in our life visibly, then the children will not follow. Very simple. If child is looking at his father and he is seeing that he is speaking false, he is lying, then what will be the effect on the child? He will not respect. He will say that this perception he will get from the father, that what kind of dharma it is, which cannot control the emotions and the bad habits in the people. So the gist is, today is the Shahid Divas and Holi is tomorrow and day after tomorrow. On this great, what is the meaning of Holi? You must all know the meaning of Holi. That outer shell of the grain is called holak. And when we roast it and it is half roast, it is called hola. And that deviation came and it became Holi. And this time we all know that in India, the wheat is ready, crop of wheat. And everyone is ready, all the farmers are ready to send it to the mandis, to the market, grain market. So the purpose of Holi was historically Vasanti Nav Sasyeshti, which means in this spring there is this new grain which must be offered in the yajna before we start having it, consume it. Because in our culture, everything, whatever before bhojan mantra, we pray that let this food be full of, it gives us, it should be rog nashak, pushtidayak, and it may not harm, it may not produce any kind of tamas in our cells. This is the prayer. So before eating, we offer in the yajna, so that the grain becomes very pure. And the energy it will give us, which will also be very beneficial to us and the society. And from the point of view of Ayurveda, there is one more thing. When we eat in this season, when so much cough and cold is there, I also have cold. Recently, when I arrived in Atlanta, so much pollen. So when, and everywhere in India also, so much transition of weather is there. So because of this transition of weather in the spring, द अधपका, जो अधपका अन्न है उसके ग्रहण करने से हमारे शरीर में कफ की प्रवृत्ति कम हो जाती है. दिस इज आयुर्वेदिक कंसेप्ट. एंड दैट इज वाई आफ्टर ऑफरिंग that grain, that holak into the full grain into the yajna, the half roast grain with its shell we eat, which controls, which reduces the kapha pravritti in us, and which makes us more handle this transition of weather. So this is the from Ayurvedic point of view, and from a spiritual point of view, this is the last festival of the year. Everyone knows. After that, the Nav Samvatsar will start from 9th April, and then all the new festivals will start coming. Then whatever we have done, as we prayed
in the beginning of our satsang, that whatever we have done in this year, mistakes, whatever mistakes we have committed, whatever we have done wrong, whatever we have said to others which hurt them in the past year, whatever which was not conducive to our progress, we must burn all that attitude, we must burn all that what is impure in our nature, in order to progress more fast, in order to progress in a new horizons in our lives. So that is also the meaning of holy, that today we burn. There is a wonderful, a very significant practice, a tradition in eastern UP. What they do, when the sarso is ready at this time, they take the sarso and they do massage of the sarso seeds, and then that sarso seed, it takes out all the mal of the body, all the impurities of the body, of the skin. It cleans it completely. After cleansing, they offer it to the holy. So I asked someone, why are you doing this? They said it removes all the disease from our body. In fact, the is in from a spiritual point of view, with the help of shastras, with the help of satsang, we must also eradicate, annihilate all the ignorance and everything whatever is obstructing in our progress in this, on this great occasion of Holi. So it is up to us, how do we perceive this festival. Some people are they have very wrong perception of Holi, and they think only to play with the colors very badly, in a bad manner, without any respect to others. They think they are just justifying Holi, but it is completely wrong perception. We need to understand the spiritual significance, to burn all the impurities in us on this great day, and to understand our duties and our object of our society and our life. The duties which are given to us is to spread the Vedic knowledge, the Vedic dharma, which is universal, which has nothing to do with any particular race and creed and caste. And on the other side, we must make the whole world noble with the utmost sincerity of practicing the Vedic values in our lives personally and socially. Without that, if we speak more, if we give high talks, and we don't follow the values in our personal life, it means we are hypocrites, and hypocrisy is like a termite in the wood. More and more, there will be no change if there is no sincerity. There will be no effective change if there is no faith in our, or in our Vedic, in Vedas and our culture. So on this great occasion of Holi and Shahid Divas, I would like to congratulate everyone, all the Aryas. So we celebrate Holi according to the Vedas. We burn our sickness, our illness, our diseases, and whatever is not conducive to our progress, whatever is hindering, obstructing, and not letting us move forward, we have to get rid of it, burn it in the light of Vedas, in the light of spiritual progress, and we must progress with full of confidence and faith and knowledge. That is our duty, and the goal is to make the whole world noble and spiritual. Dhanyavad. Namaste.
बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत ही सुंदर. आई थिंक इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट एंड यू कवर्ड लॉट ऑफ थिंग्स टुडे. Yeah, so there are so many things going on today. So we have, as you said, the martyrdom day of the three great revolutionaries, Bhagat Singh, Sukhdev, and Rajguru ji. Then Holi. I really like the way you connected all three of them and then connected it back to the Vedic message. So you quoted the mantra from Rig Veda and then how it is also related to the sixth principle of Arya Samaj. It was very well done, Acharya. Really appreciate that. I think we don't need any summary of today's. Acharya already spoke. He did use Hindi and Sanskrit whenever required, but mainly focused his pravachan in English. We appreciate that, and it is very well received. Thank you, Acharya, for that. So now moving on to the announcements. So the biggest announcement is that our Arya Mahasammelan is not very far. We are now in almost end of March. So April, May, June, only 3 months left. July 18th to 21st is the Arya Mahasammelan, International Arya Mahasammelan. We are celebrating the 200th birth anniversary of our Maharishi Swami Dayanand ji. So, and as you all are aware that this time it will be in New York. So as I'm requesting every Saturday, whenever I'm here, please make plans to attend and come in. Come not only yourself, but bring your family and friends, all who can come. So we request everybody to join and help us spread the word so that all who don't know about it can also join. So another thing, so that was about the Mahasammelan. Then as every week, we thank our donors, which make these things possible. This is because of your generous donations only that we have been able to ask Acharya Dev Varun ji to come here and help us spread the Vedic message. So he is here. He will be, as you saw today, he has now started some of the activities, taking care of some of the activities of APSA. He will be soon moving to Seattle, where he will be helping establish Arya Samaj there. There is a Havan group and small group which is in the nascent form. He will help it grow and bloom. Our best wishes and our prayers are with Acharya Dev Varun ji. We also expect him to very soon, once he moves, to start a school there. So this is another challenge we have given Acharya Dev Varun ji, that within a year he also needs to think about not only Arya Samaj but also for a school. I think this aligns very well with the 10 principles of Arya Samaj, and this is the only way I think that we will be able to sustain the Arya Samaj in the next generation. Otherwise, it will be very difficult if we don't teach our next generation about what we are living or whatever we are preaching. So it has to be done that way. So बहुत बहुत धन्यवाद. So and I'll thank all the Yajmans for today. So really appreciate you joining. मेरी एक ही सभी से निवेदन है, if you can turn on your videos, it looks nice so that we can see each other. Otherwise, it is somebody at the other side. It is dark then. So darkness is nothing. It is absence of light. So your presence is nothing if you are not on the camera. So I request everybody to join with the cameras on. Then we know that, yeah, there are people. Otherwise, who am I talking to? A blank screen, a dark face. Acharya Dev Varun ji also talking. So I really appreciate. Welcome Sudhir ji, Tej ji, Vinay ji, Raj Bhalla ji, and all others who have done that. So with that, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा, and I'll request Acharya Dev Varun ji to lead us in the Shanti Path. जी Acharya ji. शांति पाठ
ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिः। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय जय गुरुवर विरजानंद जी की जय योग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी की जय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय योगेश्वर श्री कृष्ण जी की जय सभी संतों महात्माओं और ऋषियों की जय आर्य समाज अमर रहे वेद की ज्योति जगत रहे गौ पालन करते रहें किण्वंतो विश्वमाय विश्वमार्यम् प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन, सबको सादर नमस्ते। सबका धन्यवाद।